To start with chapter 9 endocrinology and diabetes mellitus. ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है एंडोक्राइन डिस्फंक्शन में वो इजी फैटिगेबिलिटी है, हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, हाइपर पैराथायराइडिज्म होता है, हाइपोगोनाइडिज्म हो गया, एड्रिनल इंसफिशिएंसी हो गया, कुशिंग सिंड्रोम हो गया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। वेट गेन की अगर बात करें तो हाइपोथायराइडिज्म में वेट बढ़ता है, कुशिंग सिंड्रोम में वेट बढ़ता है, वेट लॉस में थायरोटॉक्सिकोसिस हो गई, एड्रिनल इंसफिशिएंसी हो गई, डायबिटीज मेलाइटस हो गई, तो इन सब केसेस में आपका वेट लॉस होता है। ठीक है, एमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया में क्या होता है, मेनोपॉज हो गया, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया, थायरोटॉक्सिकोसिस, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, कुशिंग सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। प्रीऑशियस प्यूबर्टी में गोनाडोट्रोपिन एक्सेस हो सकता है, डिलेड प्यूबर्टी में हाइपोपिट्यूटरिज्म, हाइपोगोनाडिज्म हो सकता है, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया में डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है तो तुम्हारे यूरिन बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। डायबिटीज इंसिपिडस में हाइपर पैराथायराइडिज्म ड्यू टू हाइपर कैल्सीमिया, कॉन सिंड्रोम ड्यू टू हाइपोक्लिनीमिया, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। हाइपरटेंशन फियोक्रोमोसाइटोमा की वजह से हो सकता है, कुशिंग सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो सकता है। हाइपोटेंशन एंड हाइपोग्लाइसीमिया जो एड्रीनल इंसफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, हीट इंटॉलरेंस, थायरोटॉक्सिकोसिस और मेनोपॉज की वजह से हो सकता है, पैल्पिटेशन, थायरोटॉक्सिकोसिस एंड फियोक्रोमोसाइटोमा की वजह से हो सकता है। थायराइड इनलार्जमेंट की बात करें तो गॉइटर हो गया, ग्रेव डिजीज हो गया, हाशिमोटो थायराइडाइटिस हो गया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। प्रोमिनेंस ऑफ द आईज से ग्रेव डिजीज में तुम्हें देखने को मिले। हिर्सुटिज्म की बात करें तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हो गया, कुशिंग सिंड्रोम हो गया। एलोपेशिया तुम्हारा कुशिंग सिंड्रोम और हाइपोथायराइडिज्म में होता है। गैलेक्टोरोरिया में हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया होता है। लॉस ऑफ लिबिडो हाइपोगोनाडिज्म में होता है। विजुअल डिस्फंक्शन तुम्हारा पिट्यूटरी ट्यूमर्स में हो सकता है। हेडेक एक्रोमेगेली में, पिट्यूटरी ट्यूमर में, फियोक्रोमोसाइटोमा में देखने को, मसल वीकनेस तुम्हारा थायरोटॉक्सिकोसिस, कुशिंग सिंड्रोम, हाइपोकेलेमिया, इन सब में देखने को मिलता है। हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोगोनाडिज्म ये मसल वीकनेस में। पैरास्थीसिया एंड टेटनी इज हाइपोथायराइडिज्म and recurrent ureteric colic, that is hyperparathyroidism due to hypercalcemia leading to stones, coursing of the feature, that is acromegaly and hypothyroidism, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हम ब्रीफली एनाटॉमी ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्क्राइब करेंगे। हार्मोन जो वो सिक्रीट करते हैं उनके फंक्शंस क्या हैं अकॉर्डिंग टू द मेडिसिन एस्पेक्ट्स। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड लाइज विद इन द सेला टर्शिका ऑफ द स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन के सेला टर्शिका में होता है वो। इट इज ब्रिज्ड ओवर बाय द फोल्ड ऑफ द ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के दो फोल्ड होते हैं उसके ऊपर। पिट्यूटरी ग्लैंड की डुअल एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन है, दैट इज एंटीरियर लोब इज फॉर्म बाय द रैथकेस पाउच एंड पोस्टीरियर लोब इज फॉर्म from the floor of the third ventricle. It is composed of the two predominant lobe, that is anterior adenohypophysis और posterior वाला neurohypophysis। दो लोब होते हैं। एक इंटरमीडिएट लोब भी होता है जो कि रेडिमेंट्री होता है ह्यूमंस में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ऑफ द ग्लैंड्स आर द स्फेनॉइड साइनस एंटीरियो इंफीरियरली, उसमें स्फेनॉइड साइनस होता है, कैवर्नस साइनस होता है विद द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड द क्रेनियल नर्व 3, 4, 5 and 6 laterally and coptic chiasma anterior to the pituitary stalk and is connected to the hypothalamus. Gland hypothalamus से connected होता है by the infundibular stalk which has portal vessels carrying the blood from the median eminence of the hypothalamus to the anterior lobe and the nerve fibers to the posterior lobe. nerve fibers होती हैं to the posterior lobe। तो ये जैसे आप देख सकते हो ये सेला टर्शिका में लोकेटेड होता है। इंटरमीडिएट लोब हो गया ये आपका, इंटीरियर लोब हो गया, पोस्टीरियर लोब हो गया, एडनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, इन्फंट हाइपोथैलेमस से इन्फंडिबुलर स्टॉक से अटैच्ड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड आर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जो होते हैं वो ग्रोथ हार्मोन हो गया। ग्रोथ हार्मोन बेसिकली प्रमोट करता है ग्रोथ और लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म प्रमोट करता है। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जिसे ACTH भी बोलते हैं वो स्टिमुलेट करता है एड्रीनल ग्लैंड को, जिसकी वजह से प्रोडक्शन होता है हार्मोन्स का सच एज कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन। इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड द फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग जो कि TSH है, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा जो कि स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन रिलीज होता है। थायराइड हार्मोन कंट्रोल करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को और प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग FSH होता है
जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, जो ग्रोथ ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन इंक्लूडेड होता है FSH और LH में। प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन में तुम्हारे पास एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है जो कि कन्वर्जन ऑफ द बॉडी वाटर कराता है। ऑक्सीटोसिन होता है जो कि स्टिमुलेट करता है मिल्क एजेक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ठीक है। हाइपोपिट्यूटिज्म, पैन हाइपोपिट्यूटिज्म refers to the decrease in the secretion of the pituitary hormone। पिट्यूटरी हार्मोन डिक्रीज होना, हाइपोपिट्यूटिज्म जिसे पैन हाइपोपिट्यूटिज्म बोलते हैं, कैन रिजल्ट इधर फ्रॉम द डिजीज ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की कोई डिजीज होगी उसकी वजह से, या फिर डिजीज ऑफ द हाइपोथैलेमस लीडिंग टू द डेफिशिएंसी ऑफ द हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। कॉजेज ऑफ हाइपोपिट्यूटिज्म, पिट्यूटरी डिजीज हो सकती है, मास लेजन हो सकता है, पिट्यूटरी एडिनोमा हो सकता है, सिस्ट हो सकता है, मेटास्टैटिक कैंसर हो सकता है, पोस्ट पार्टम नेक्रोसिस होती है जिसे शिहान सिंड्रोम भी बोलते हैं, पिट्यूटरी सर्जरी, पिट्यूटरी रेडिएशन, हेमरेज, इन्फिल्ट्रेटिव रेजन, हीमोक्रोमोसाइटोसिस एंड द lymphocytic hypophysitis, एम्प्टी सेलर सिंड्रोम और हाइपोथैलेमस डिजीज हो सकती है, मास लेजन हो सकता है, सार्कोइडोसिस, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, ट्यूबरकुलोसिस या फिर हेमरेज, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म डिपेंड्स अपॉन द कॉज एज वेल एज द डेफिशिएंसी ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। Growth hormone deficiency lead to the short stature in the children, and the adult it may result in the diminished muscle mass and increased fat mass and diminished sense of well-being, ठीक है। TSH deficiency अगर बोलें तो clinical features are due to the accompanying thyroxine deficiency. Features are fatigue, lethargy, cold intolerance, decreased appetite, constipation, facial puffiness, dry skin, bradycardia, delayed relaxation of the deep tendon reflexes and anemia, ये सारी चीज़ें होती हैं। ACTH deficiency presentation is due to the cortisol deficiency and can be in the form of the acute adrenal, ये सब जो है acute adrenal insufficiency के फॉर्म में होता है, characterized by the hypotension। Mild chronic deficiency causes fatigue, anorexia, weight loss, decreased libido, hypoglycemia and eosinophilia। Gonadotropin deficiency, that is FSH or LH, causes hypogonadism in both men and women। Women have high ovarian hypofunction resulting in inability to ovulate, infertility, oligomenorrhea, amenorrhea, vaginal dryness, atrophy and fatigue, ये सारी चीज़ें होती हैं। Estradiol deficiency causes hot flashes। Men have testicular hypofunction which results in the infertility, decreased testosterone secretion and later causes decreased energy, libido, decreased bone mineral density। प्रोलैक्टिन डिफिशियंसी, इनएबिलिटी टू लैक्टेट आफ्टर डिलीवरी, प्रोलैक्टिन डिफिशियंसी होती है। पेशेंट विद द पिट्यूटरी और द सेलर मास में हैव सिम्टम्स रिलेटेड टू द मास सच एज हेडेक हो गया, विजुअल लॉस हो गया, डिप्लोपिया हो गया। इन्वेस्टिगेशन अगर सेरम लेवल ऑफ ऑल द हार्मोन secreted by the pituitary glands are low ACTH, low TSH, low FSH, LH and low growth hormone। In addition to the low level of these hormones, the corresponding hormones stimulated by are also low. These include low cortisol, low T3, low T4, low testosterone, low estradiol। CT or MRI of the head identify pituitary pathology। Treatment of hypopituitarism involves the treatment of each individual target gland hormone deficiency। ACTH deficiency अगर होती है तो it is treated by giving hydrocortisone and other glucocorticoid, दूसरे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड चला देते हैं, ठीक है। TSH deficiency में क्या करते हैं, जो कि रिजल्ट करता है in the thyroxine deficiency is treated with L-thyroxine। In the men with the high gonadotropin deficiency, testosterone replacement is indicated when fertility is not desired। Fertility is desired, they are treated with the gonadotropins। अगर फर्टिलिटी डिजायर्ड नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन का रिप्लेसमेंट कर देते हैं, या फिर अगर फर्टिलिटी रिक्वायर्ड है तो गोनाडोट्रोपिन से ट्रीट करेंगे। इन द वुमेन विद द गोनाडोट्रोपिन डेफिशिएंसी, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज गिवन is enough if the fertility is not desired। If the fertility is desired, then they should be treated with the gonadotropin or pulsatile GnRS therapy is induced to induce the ovulation। pulsatile GnRS therapy देते हैं कि ओवुलेशन को इंड्यूस करेगी, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन इज रिप्लेस्ड विद द रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी इन्फ्रैक्शन या फिर शियान सिंड्रोम बोल दो। हाइपोपिट्यूटरिज्म ड्यू टू इन्फ्रैक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड आफ्टर द पोस्टमार्टम। PPH होने के बाद शिहान सिंड्रोम होना बहुत कॉमन है।
Hypopituitarism due to infraction of the pituitary gland after the postpartum hemorrhage is called Sheehan syndrome. The pituitary gland is physiologically enlarged in the pregnancy and is therefore is very sensitive to decreased blood supply flow caused by the massive hemorrhage and the hypovolemic shock. In the developed countries, Sheehan syndrome is less common due to the improved obstetrical care. However, underdeveloped and the developing country, it remains common cause of the hypopituitarism. Patients often have a history of the severe postpartum hemorrhage causes hypotension and requiring blood transfusion. Severe hypopituitarism manifests during the first days and the weeks after delivery. Less severe hypopituitarism manifests weeks or months after the delivery. Failure to lactate or difficulties with the lactations are common initial symptoms of the Sheehan syndrome due to prolactin deficiency. Many women also report amenorrhea, oligomenorrhea after delivery due to FSH or LH deficiency. Other features include fatigue, anorexia, weight loss due to decreased ACTH, features of the hypopituitarism due to decreased TSH. There is deficiency of all the hormone. An example that is growth hormone, prolactin, gonadotropin, TSH and ACTH. CT scan MRI shows a small pituitary with the sella of normal size, sometimes read as empty sella. Treatment is same as that for the hypopituitarism. Enumerate the causes of the short stature. Short stature के जो causes हो सकते हैं उसमें normal variation of the growth, फेमेलियल शॉर्ट स्टेचर हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिले हो गई ग्रोथ में, प्यूबर्टी में, इडियोपैथिक शॉर्ट स्टेचर हो सकता है, स्मॉल जेस्टेशनल एज हो गई इन्फेंट की विद कैचअप ग्रोथ, सिस्टमिक डिसऑर्डर विद द सेकेंडरी इफेक्ट ऑन द ग्रोथ, malnutrition, glucocorticoid therapy, gastrointestinal disease, rheumatological disease, renal disease, CKD हो गया, कैंसर हो गया, पल्मोनरी डिजीज हो गई, उसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस, ब्रोंकियोस्टेसिस हो गई, कार्डियक डिजीज में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो गई कोई, या फिर मेटाबॉलिक डिजीज हो गई. एंडोक्राइन कॉजेज ऑफ द ग्रोथ फेलियर आर Cushing syndrome, hypothyroidism, growth hormone deficiency, vitamin D deficiency, precocious puberty. Genetic diseases with the primary effect on the growth are Turner syndrome, Prader-Willi syndrome, Noan syndrome, Russell-Silver syndrome and skeletal dysplasia. ठीक है. Next we come to etiology and the clinical feature, investigation, management of the acromegaly and gigantism. एक्रोमेगैली बेसिकली क्लिनिकल सिंड्रोम होता है जो कि रिजल्ट होता है फ्रॉम द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन. बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो गया, एक्रोमेगैली हो जाए. ग्रोथ हार्मोन हाइपर सिक्रीशन अगर बिफोर एपिफाइसिस, एपिफाइसिस होने से पहले, एपिफाइसिस जो फ्यूज हो जाते हैं, बिफोर एपिफाइसिस फ्यूजेस, ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन अगर हो गया, इन दैट केस then the gigantism will result. If the growth hormone excess occurs in the adult life after epiphyseal closure, then the acromegaly occurs. ठीक है. गाइगेंटिज्म तब होगा जब एपिफाइसेस फ्यूज नहीं हुई हैं, उससे पहले अगर ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस हो गई. अगर ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस आपकी बाद में हो रही है, आफ्टर यू हैव फ्यूज्ड विद द एपिफाइसेस, देन एक्रोमेगैली होगा. इफ द हाइपर सिक्रीशन स्टार्ट इन द एडोलसेंस एंड परसिस्ट इनटू द एडल्ट लाइफ, देन द टू कंडीशंस मे बी कंबाइंड. ठीक है. The mean age of the diagnosis of the acromegaly is 40 to 45 ईयर में समझ में आती है acromegaly बंदे को हो गई. Most common cause of the acromegaly is somatotrop, वो growth hormone secreting adenoma होते हैं of the anterior pituitary. Most of these are macroadenoma. The other causes are acromegaly are excess secretion of the growth hormone releasing hormone by the hypothalamic tumors and ectopic GnRH secretion by the non-endocrine tumors such as the carcinoid tumor or the small lung cancer, and the ectopic secretion of the growth hormone by the non-endocrine tumor. There is stimulation of the growth of many tissues such as the skin, connective tissue, cartilage, bone, viscera and many epithelial tissues. Findings include enlarged jaw, that is macrogynecia, enlarged swollen hand and feet. Facial features में वो कोरस हो जाते हैं with enlargement of the nose, frontal bones and jaws. The teeth become spread apart, macroglossia, enlargement of the soft tissue of the larynx, leading to obstructive sleep apnea. Skin thickness is increased and hyperhidrosis is common. Hair growth increases and some women have hirsutism. Enlargement of the synovial tissue and the cartilage causes
trophic orthopathy of the joint. The fatigue and the weakness can be prominent symptoms. They may result from the sleep apnea, cardiovascular dysfunction, neuropathy, hypogonadism, and hyperglycemia. Cardiovascular abnormalities include hypertension, left ventricle hypertrophy, cardiomyopathy. Pituitary adenoma causes local symptoms such as headache, visual field defect, classically bitemporal hemianopias, and the cranial nerve palsies. It may also cause a decreased secretion of other pituitary hormone due to its mass effect, most commonly gonadotropins. Many women with the acromegaly have menstrual dysfunction. Menstrual dysfunction भी होते हैं, hot flushes and the vaginal atrophy. There is increased risk of the colon cancer and uterine fibroid. ये सब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो एज यू कैन सी द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्रोमेगैली, नीचे से शुरू करते हैं। लार्ज ब्रॉड फीट, जो पैर होंगे बड़े ब्रॉड हो जाएंगे। देन ऑस्टियोआर्थरोसिस, ठीक है। देन टेस्टिकुलर एट्रोफी, फिर उसके हैंड जो होंगे वो यहाँ से देखते हैं, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, हाइपरटेंशन, हिपैटोमेगैली, कार्डियोमेगैली, गैलेक्टोरोइया, गोइटर। देन आपके हैंड में क्या होगा, हैंड में लार्ज हैंड होंगे, कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, हाइपरटेंशन रहेगा, और तुम्हारा लार्ज टंग, जीभ बहुत बड़ी होगी, एक्ने होगा, ठीक है, ऑक्यूलर पैल्सीज होंगी, आंखों में प्रॉब्लम होंगी, ठीक है, वाइडली स्पेस्ड टीथ होंगे, थिक लिप्स होंगे, लार्ज नोज होगी, स्कार ऑफ प्रीवियस पिट्यूटरी सर्जरी, प्रोमिनेंट सुप्राऑर्बिटल रीजन एंड द थिक स्किन फोल्ड बहुत थिक होंगे, ठीक है। मोर्टेलिटी इज इंक्रीज इन द एक्रोमेगैली ड्यू टू द कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड द कैंसर। Insulin like growth factor IGF-1 is the mediator of the growth hormone action. Since the growth hormone secretion is pulsatile, its measurement is not very reliable. Instead, insulin like growth factor 1 measurement can be done as a marker for the growth hormone secretion. IGF-1 level relatively stable and correlate with the clinical acromegaly. Elevated growth hormone level biochemical diagnosis is made by determining the growth hormone and the IGF-1 level after OGTT, oral glucose tolerance test, with 75 gram of the glucose in normal subjects. Growth hormone suppresses to below 0.4 microgram per liter after OGTT, a value greater than 0.4 microgram per liter after OGTT, and high insulin like growth factor 1 level indicate acromegaly. Blood glucose level may be high due to excess growth hormone causing insulin resistance. Prolactin concentration are elevated in about 30% of the patient due to the co-secretion of prolactin found the pituitary adenoma. CT or MRI of the brain demonstrate pituitary adenoma. A skull X-ray may show cortical thickening, enlargement of the frontal sinuses, and enlargement and erosion of the sella turcica. X-ray of the hands show tufting of the terminal phalanges and the soft tissue thickening. Surgical management अगर देखें तो transsphenoidal surgery to remove the adenoma, usually first line of the treatment, and may result in the cure of the growth hormone excess. Surgery is also useful. Debulk the tumor followed by the second line therapy. Radiotherapy, external radiotherapy is employed as a second line of treatment if the acromegaly persists after the surgery. Medical, this may be employed in the patient with the persisting acromegaly after the surgery. Agents which can suppress the growth hormone secretion are somatostatin analog, that is octreotide and lanreotide. Somatostatin analog हम चला देंगे, octreotide and lanreotide. डोपामिन एगोनिस्ट चलेगा, दैट इज ब्रोमोक्रिप्टिन हो गया, कैबरग्लोबुलिन हो गया, जीएच रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हो गया, पेगविसोमेंट हो गया. Growth hormone deficiency are same as the cause listed under the hypopituitarism. Growth hormone deficiency in the children, short stature. Growth hormone deficiency in the adult is associated with the decrease in the lean body mass and increase in the fat mass. Other features are higher serum LDL cholesterol, impairment of the cardiovascular features, and the decrease in bone mineral density. Feeling less healthy and less energetic than the normal subjects and reduced life expectancy. ठीक है,
Diagnosis: reduced serum IGF-1 or growth hormone level. Provocative test: a subnormal rise in the serum growth hormone concentration after the insulin-induced hypoglycemia or after injection of the combination of arginine and growth hormone releasing hormone. Confirms the diagnosis of the growth hormone deficiency. The treatment, that is recombinant human growth hormone preparations, are available. The growth hormone is given subcutaneous injection once a day and usually in the evening. All the children with the growth hormone deficiency should receive the recombinant growth hormone to normalize the growth and the development. Growth hormone should also be given to the adult patient. Growth hormone हमें adult patients को दे देना चाहिए with the severe clinical manifestation and unequivocal biochemical evidence of the growth hormone deficiency. Dose of the growth hormone should be adjusted to maintain the serum IGF-1 level with the normal range. Hyperprolactinemia, prolactinoma, and galactorrhea. Hyperprolactinemia is a common biochemical abnormality. Cardinal features are galactorrhea, hypogonadism. Galactorrhea refers to the lactation without breastfeeding. Prolactin stimulates the milk secretion but not the breast development. Prolactin milk secretion को stimulate करता है लेकिन breast development को नहीं. Hence the galactorrhea is not seen in the men. ठीक है, ठीक है. Hyperprolactinemia is common is biochemical abnormality. ठीक है. Galactorrhea and hypogonadism. Galactorrhea refers to the lactation without breastfeeding. ठीक है. प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट करता है मिल्क सिक्रीशन विदाउट ब्रेस्ट डेवलपमेंट. हेंस गैलेक्टोरोइया इज नॉट सीन इन मेन बट कैन अकर इफ देयर इज गायनेकोमेस्टिया. अगर वहाँ गायनेकोमेस्टिया हो रखा है तो वो अकर कर सकता है. प्रोलैक्टिनोमा इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द hyperprolactinemia. Most prolactinomas are premenopausal in the women with microadenoma because they are detected early due to the symptoms in the men, and the post-menopausal women tumors are usually macroadenoma due to late presentation. कॉजेस क्या हो सकते हैं हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के? स्ट्रेस हो सकती है पोस्ट सीजर. ठीक है. प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, निपल स्टिमुलेशन, क्वाइटस या फिर बेबी क्राइंग. ठीक है, ये सब हो सकते हैं. डोपामिन एंटागोनिस्ट हो गया, फिनोथायाजीन्स हो गया, ब्यूटाइरोफेनोन्स हो गया, एंटी डिप्रेसेंट्स हो गया, मेटोक्लोप्रामाइड एंड डोमपेरिडोन हो गया. डोपामिन डिप्लेटिंग ड्रग्स दैट इज रिजरपाइन एंड मिथाइल डोपा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. Pathologically, prolactinoma, usually microadenoma, disconnection, hyperprolactinemia, non-functioning pituitary macroadenoma, polycystic ovarian disease, hypothalamic disease, hypothyroidism, pituitary tumor secreting prolactin and the growth hormone. Macroprolactinemia, renal failure, ectopic source. ये सब हो गया. In the woman, there is galactorrhea and the hypogonadism, leading to the secondary amenorrhea, anovulation and infertility. And in men, there is decreased libido and reduced shaving frequency and lethargy. There may be headache, visual field defects due to the mass effect of the prolactinoma. The investigation of pregnancy should be excluded in the urine pregnancy test and ultrasound in all the women of the childbearing age. The serum prolactin level are raised. Thyroid function test to exclude the primary hypothyroidism and causing TRH induced prolactin excess. MRI or CT scan of the head to exclude the hypothalamic or pituitary tumor. Assessment of the other pituitary hormone in the patient with the macroadenoma. Management में क्या करना है? Underlying cause of the hyperprolactinemia should be corrected. Examples are stopping the offending drug, correcting the primary hypothyroidism. If this is not possible, dopamine agonist therapy, that is bromocriptine, cabergoline, quinidolide and pergolide with normalized prolactin level. Prolactinoma can be treated by the following ways, that is मेडिकल में डोपामिन एगोनिस्ट ड्रग चलेगी, that is जैसे ब्रोमोक्रिप्टिन हो गया, ठीक है, कैबरगोलिन हो गया, आर द फर्स्ट लाइन थेरेपी. Dopamine agonist not only lower the prolactin level but also
shrink the majority of the prolactin secreting macroadenoma. Cabergoline is the first choice due to more efficacy and lesser side effect. Surgical removal may be required if the tumor is large and invasive or the patient is unable to tolerate the dopamine agonist. Tumor can be removed by transsphenoidal surgery. Radiotherapy में external irradiation may be required for some macroadenoma to prevent the regrowth if the dopamine agonists are stopped. Diabetes insipidus results from the deficiency of the vasopressin ADH due to hypothalamic pituitary disorder, that is central diabetes insipidus होगी वो, from resistance of the kidneys to vasopressin, that is nephrogenic डायबिटिक इंसिपिटस. डायबिटीज इंसिपिटस दो टाइप की हो सकती है. एक तो तुम्हारी वो हो सकती है जो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिटस है, वो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसऑर्डर की वजह से होती है, और रेजिस्टेंट टू द किडनी टू वासोप्रेसिन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस होती है वो. The posterior lobe of the pituitary is the primary site for the vasopressin storage and release, but the vasopressin is sensitized within the hypothalamus. Diabetes insipidus is characterized by the excretion of large quantity of the dilated urine and increased thirst. बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और बहुत ज़्यादा यूरिन होती है. ठीक है. इसमें सेंट्रल में क्या फीचर होते हैं? इडियोपैथिक होती है, स्ट्रक्चरल हाइपोथैलेमिक हाई स्टॉक लेजन हो गया, फेमिलियल डिजीज DID, MOAD syndrome, or association of diabetes insipidus with the diabetes mellitus, optic atrophy and deafness. The neurosurgery or trauma, cancer, primary brain tumor, metastasis, hypoxic encephalopathy, infiltrative disorders में histiocytosis and sarcoidosis. नेफ्रोजेनिक में जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं, वैसोप्रेसिन 2 रिसेप्टर म्यूटेशन, एक्वापोरिन 2 म्यूटेशन एंड सिस्टिनोसिस. मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज में हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, ड्रग लिथियम एंड डेमेक्लोसाइक्लिन. पॉइजनिंग में हैवी मेटल हो गया, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो गई. ठीक है. Polyuria, polydipsia patient may pass 5 to 20 liters or more of the diluted urine in 24 hours. Polyuria lead to the excess thirst and polydipsia. Diabetes insipidus may lead to the dangerous hypovolemia if the patient does not have access to the water or there is impaired thirst mechanism. The measurement of 24-hour urine volume and the creatinine excretion. Urine is clear and of low specific gravity. Urine osmolality is usually less than the plasma. Serum glucose, urea, calcium, potassium and the sodium. Vasopressin challenge test होता है जिसमें desmopressin analog of the vasopressin is given in initial dose of 5 to 10 microgram intranasally or 1 microgram subcutaneously or intravenously. The urine volume is measured for 12 hours before and 12 hours after administration. Serum sodium should be measured if the patient develops symptoms of the hyponatremia. Patient with the central diabetes insipidus notices distinct reduction in the thirst and polyuria. Serum sodium stays normal except in the some salt losing conditions. Water deprivation test. It is done to confirm the diagnosis of diabetes insipidus and to differentiate the central from the nephrogenic causes. Patient is advised not to take any oral any fluid for many hours and his body weight, urine volume, plasma and the urine osmolality are monitored hourly. Patient with the diabetes insipidus continue to pass large quantity of the diluted urine in spite of the water deprivation, whereas normal patient would pass less amount of the concentrated urine. In addition, there is rise in the serum osmolality and the sodium concentration in the diabetes insipidus as there is depletion of the plasma volume. Where the plasma osmolality rises above 300 milliosmol per kg, exogenous desmopressin is given 2 microgram intravenously. Central diabetes insipidus is confirmed if the urine osmolality rises by at least 50% after desmopressin DDAVP, and nephrogenic diabetes insipidus is confirmed if desmopressin DDAVP does not concentrate the urine. MRI of the pituitary and the hypothalamus to look for the mass lesion. Mass lesion को देखना है. Treatment of the central diabetes insipidus is with the desmopressin
which is an ADH analog, and desmopressin is usually administered as the dose spray into the nose, and in emergencies desmopressin is given by the intramuscular injection. The dose of the desmopressin is adjusted to keep the plasma sodium concentration or the osmolality in the normal range. The main side effect of the desmopressin is excess water retention and the hyponatremia. Nephrogenic diabetes insipidus is treated by the thiazide diuretic, has paradoxical effect of the reducing the urine volume in the diabetes insipidus, amyloride and NSAIDs in the endomethacin. The thyroid function test की बात करें तो thyroid secrete करता है T4 and T3, which is regulated by the pituitary TSH. TSH secretion in the turn is controlled through the negative feedback of the thyroid hormone. TSH secretion is regulated by the thyroid releasing hormone TRH from the hypothalamus. Thyroid function is assessed by one or more of the following tests, that is serum TSH concentration, serum T3 and T4 concentration, serum free T3 and T4, uptake of the radioactive iodine or the technetium. नॉर्मल TSH होता है, ठीक है, सेरम T3 T4 नॉर्मल है तो यूथोराइड इंटरप्रिटेशन। अगर TSH कम है और T3 T4 बढ़ा हुआ है, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, प्रॉब्लम इज इन थायराइड ग्लैंड। अगर तुम्हारा TSH बढ़ा हुआ है और T3 T4 नॉर्मल है तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, प्रॉब्लम इज इन द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब अगर TSH हाई है और T3 T4 भी हाई है, TSH mediated hyperthyroidism, problem is in the pituitary. लो है, दोनों लो है, central hypothyroidism, problem is in the pituitary, ठीक है। Radionucleotide thyroid scanning, radionucleotide thyroid scanning using technetium 99 is useful in demonstrating the disturbance and the function of the thyroid gland. Earlier iodine 131 was being used, which has largely been replaced by the technetium 99, which is closely mimics the radioactive iodine. Technetium 99 is injected intravenously into the arm, and images of the thyroid are obtained with the gamma camera approximately 20 minutes later. Increased uniform radionucleotide uptake is seen in the Graves' disease. Toxic adenoma appears as a focal area of increased uptake, suppressed uptake in the remainder of the gland. The toxic multinodular goiter are multiple areas of the relatively increased or decreased uptake. Subacute thyroiditis is associated with a very low uptake. Thyroid scanning is also used in the follow-up of the thyroid cancer. After the thyroidectomy, radioablation using the radioactive iodine, there is diminished radionucleotide uptake in the thyroid gland. Areas of the uptake indicate residual and the metastatic thyroid cancer. The etiology, clinical feature, investigation, management of the hyperthyroidism. Hyperthyroidism या फिर thyrotoxicosis जो होती है, characterized by the increased synthesis and secretion of thyroid hormone, which leads to the hypermetabolic state. Causes of hyperthyroidism, autoimmune thyroid disease हो गई, एक Graves' disease हो गई, Hashimotoxicosis, toxic adenoma, toxic multinodular goiter हो गया, TSH producing adenoma, pituitary adenoma, human chronic gonadotropin mediated hyperthyroidism, and exogenous thyroid hormone intake, स्ट्रोमा ओवरी, मेटास्टैटिक फॉलिकुलर थायराइड कैंसर एंड ड्रग्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं, जनरल फीचर्स क्या हैं तुम्हारे, वेट लॉस हुआ है डिस्पाइट नॉर्मल और इंक्रीज एपेटाइट, हीट इंटॉलरेंस, फैटीग, गोइटर विद ब्रूट, single or multiple nodule may be present in the thyroid, diarrhea, hyperdefecation, anorexia, vomiting, diarrhea, hyperdefecation, anorexia, vomiting, systolic hypertension, increased pulse pressure, palpitation, sinus tachycardia, atrial fibrillation, high output cardiac failure, angina, exacerbation of the asthma, dyspnea and on excretion, the lymphadenopathy, क्रोमिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, नर्वस सिस्टम में ट्रेमर हो गया, मसल वीकनेस हो गया, पीरियोडिक पैरालिसिस हो गई, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो गया, इल सस्टेन क्लोनस हो गया, प्रॉक्सिमल मायोपैथी हो गया, बल्बर मायोपैथी हो गया, स्किन में इंक्रीज स्वेटिंग हो गई, प्रूराइटिस हो गई, हेयर थिनिंग, एलोपेशिया हो गया, पामर
एरिथमिया हो गया, पेरिटिबियल मिक्स्ड एडिमा हो गया, ऑनकाइलोसिस हो गया, हाइपरपिगमेंटेशन हो गया, विटिलिगो कैन occur in the association with the autoimmune thyroid disorder. Genitourinary system में amenorrhea, oligomenoria, infertility, spontaneous abortion, loss of libido, impotency, gynecomastia, urinary frequency, nocturia हो गया, eye में stare हो गया, lid lag हो गया, gritty feeling और the pain in the eye हो गया, excessive lacrimation, diplopia, loss of acuity, ऑप्थेल्मोस हो गया, और पेरिऑर्बिटल कंजक्टिवल एडिमा हो गया, कॉर्निया अल्सरेशन, ऑप्थेल्मोप्लेजिया एंड पेपिलरी एडिमा हो गया, बोन में ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, फ्रैक्चर हो गया, लॉस ऑफ द हाइट हो गया, साइकेट्री में एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, इमोशनल लायबिलिटी एंड साइकोसिस, ये सारे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. About one third of the elderly patient with the hyperthyroidism may be apathetic rather than having the hyperactivity tremor and the other symptoms of the sympathetic overactivity. Apathetic or the masked hyperthyroidism. Tachycardia may be absent because of the coexisting condition of the abnormality. Serum T3 and T4 are elevated. Serum TSH is low in the primary thyrotoxicosis. Problem in the thyroid gland. High in the TSH-induced thyrotoxicosis. Pituitary adenoma secreting the TSH. TSH receptor antibody TRAB are elevated in the Graves' disease. Antithyroid peroxidase, anti-TPO antibodies titers are significantly elevated in the Graves' disease and usually are low or absent in the toxic multinodular goiter or the toxic adenoma. Isotopes scanning may show increased or the decreased uptake depending upon the cause. Increased uptake is seen in the Graves' disease, decreased uptake is seen in the thyroiditis, and the radioactive iodine uptake tests have been largely suppressed by 99M technetium scintigraphy scans, which are quicker to perform with lower dose of the radioactivity and provide a higher resolution image. Thyroid ultrasound. Thyroid ultrasound can identify the nodules and distinguish the solid from the cystic region. Ultrasound guided FNAC helps in obtaining the cytological material from the nodules. Are difficult to identify the palpation. They are difficult to identify the palpation. Definitive treatment of thyrotoxicosis depends upon the underlying cause. May include antithyroid drugs, radioactive iodine, and the surgery. Antithyroid drugs decrease the thyroid hormone synthesis and releases the thyroid gland. The thiamide derivative propylthiouracil and the methimazole and the carbimazole are the drug of the first choice. In the Graves' disease, these drugs interfere with the organification and iodo-tyrosine coupling by inhibiting the peroxidase enzyme. Peroxidase enzyme को inhibit करते हैं और ये तुम्हारा interfere करते हैं organification and iodo-tyrosine coupling. By inhibiting the peroxidase enzyme, the drugs are rapidly absorbed from the GHT and concentrated in the thyroid. Propylthiouracil inhibit करता है peripheral conversion of T4 to T3, contributing about 10 to 20% of the decrease in T3. The effect is not seen with the methimazole and carbimazole. Both the propylthiouracil and methimazole cross the placenta and can interfere with the fetal thyroid function. Propylthiouracil can cause जो इसीलिए इनको हम नहीं देंगे. प्रोपाइलथायोसिन मेथामाजोल प्लासेंटा क्रॉस करते हैं. प्रोपाइलथायोसिन कैन कॉज हेपेटिक फेलियर एंड ओनली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी. प्रोपाइलथायोसिन जो होती है वो तुम्हारी हेपेटिक फेलियर करा सकती है, इसीलिए उसे सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी में ही यूज करेंगे, उसके बाद नहीं यूज करेंगे. मेथामाजोल इज स्टार्टेड एट द डोज ऑफ द 5 to 10 mg OD. Improvement of the thyrotoxicosis symptoms usually takes 2 to 3 weeks. Thyroid hormone values are checked. थायराइड हार्मोन की वैल्यू जो है चेक करनी है तुम्हें 4 weeks पे आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द थेरेपी. एंड इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन थायराइड फंक्शन टेस्ट, द डोज may be increased to 30 to 40 mg a day. Once the thyroid hormones levels normalize, the dose is decreased. Most patients can be maintained on the low dose of the 2.5 to 5 mg methimazole. The propylthiouracil is given at a dose of the 100 to 150 mg every 8 hours. The most important effect of the antithyroid drugs is agranulocytosis, and the patient should be told to discontinue their medication and contact their physician when the fever occurs or the infection develops, especially in the oropharynx.
If the agranulocytosis develops, antithyroid drugs should be discontinued and the broad-spectrum antibiotics should be given. And the other treatment modalities such as the radioactive iodine should be chosen for the further treatment. The radioactive iodine, iodine 131 is used to treat the hyperthyroidism. Older patient with the moderate hyperthyroidism and the thyroid enlargement for the patient with the prior allergic and the toxic reactions to the antithyroid medication, poor compliance with the antithyroid drugs, and after the antithyroid have failed to induce the long-term euthyroid state. Radioiodine treatment is contraindicated during the pregnancy, and the pregnancy should be avoided for the 6 to 12 months after the radioiodine treatment. Anti-thyroid drugs should be stopped for 3 to 4 days before the radioiodine administration, and a dose of 5 to 10 mci is usually required. Improvement in the thyrotoxicosis occurs after 4 to 5 days. Almost 80% of the patients are cured with one dose and remaining a second dose, which should be given 6 months after the first dose. After giving the radioactive iodine, antithyroid drug can be added at day 5 to reach a euthyroid state more quickly. Beta blockers are also used in the sympathetic control. Rarely, the radioiodine can induce the painful thyroiditis and lead to the thyroid storm. Hypothyroidism is a risk, or more than 50% of the patient become hypothyroid after the radioiodine treatment. Surgical therapy, that is subtotal thyroidectomy, can be used to treat the hyperthyroidism in the following situation: the patient with the large goiter causing obstructive symptoms, malignant thyroid nodules, and the pregnant woman with a severe hyperthyroidism which is difficult to control in antithyroid drug. Young patients हो गए with who are difficult to control on the antithyroid drugs, वो हो गए patient with the toxic reactions to antithyroid drug, patient who are not candidate for any antithyroid drugs and refuse radioactive iodine. However, hyperthyroidism should be controlled before surgery using the propylthiouracil methimazole, and thyroid surgery is contraindicated in severely hyperthyroid patient. The symptomatic treatment, that is in all the patient with the thyrotoxicosis, a non-selective beta blocker such as propanol and nadolol should be used to control the symptoms such as tachycardia, palpitation, etc. Discuss the etiology and the pathogenesis and the clinical features, that is investigation and management of the Graves' disease. Graves' disease, first described by the Roberts Grave, is a syndrome that consists of the hyperthyroidism, goiter, ophthalmopathy, and occasional infiltrative dermatopathy, that is peritrabeal myxedema. The term Graves' disease and the hyperthyroidism are not synonymous because some patients with the Graves' disease have ophthalmopathy but no hyperthyroidism. Graves' disease and hyperthyroidism synonyms नहीं है. कुछ पेशेंट में ग्रेव्स डिजीज होती है, हैव ऑप्थेल्मोपैथी बट नो हाइपरथायराइडिज्म. ठीक है. ग्रेव्स डिजीज हाइपरथायराइडिज्म हो ना हो, ऑप्थेल्मोपैथी है, ग्रेव्स डिजीज हो सकता है. Graves' disease is most likely an autoimmune disorder. Graves' disease एक autoimmune disorder characterized by autoantibody to TSH receptor. Antibody activate the receptor, thereby stimulating the thyroid hormone synthesis and secretion as well as thyroid growth, causing goiter. These antibodies are produced by the B lymphocytes. Infiltrative ophthalmopathy and dermatopathy are specific to the Graves' disease and are due to immunologically mediated activation of the fibroblast in the extraocular muscle and the skin, with the accumulation of the glycosaminoglycan leading to the water wrapping and the edema initially, followed by the fibrosis later. There is genetic predisposition of the Graves' disease with the evidence by the strong association of the Graves' disease with the HLA-B8 and DR3 and DR2 with and high concordance rate in the monozygotic twins. Viral and bacterial infections has been suspected to trigger the development of the thyrotoxicosis. Genetically susceptible individual, Escherichia coli, Yersinia enterocoletica, possesses cell membrane TSH receptor antibodies to these microbial agents may cross react with the TSH receptor on the host thyroid follicular cell.
Iodine supplementation of the iodine deficient areas can trigger the development of the thyrotoxicosis in those with the pre-existing subclinical and the Graves' disease. Histological examination of the thyroid gland shows follicular hyperplasia and the patchy lymphocytic infiltration. ठीक है. Clinical features are same as that discussed under the hyperthyroidism. Features specific to the Graves' disease are ophthalmopathy, infiltrative dermatopathy, that is peritibial myxedema. Ophthalmopathy lead to the proptosis and the lid retraction, preventing complete eye closure of the eye, resulting in the exposure keratitis and corneal ulceration. Compression of the optic nerve at the posterior apex of the by the enlarged muscles may lead to the blurring and impaired visual acuity, visual field defect, and impairment of the color vision in the papillae. Treatment of the ophthalmopathy involves the prevention of drying, infection of the cornea by applying the artificial tear, antibiotic drops, and the surgical decoloration may required in the severe proptosis with the optic nerve compression. Investigation in the treatment, this is the same as discussed under the hyperthyroidism. थायराइड डर्मेटोपैथी से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.